Hello everyone. So we are discussing odd row zero condition. We have already discussed two numericals on odd row zero. This is the third numerical on odd row zero condition. If I'm not wrong, it is example number 8. 8 थोड़ा 8th है या 7th है, एक बार चेक कर लेना कौन सा example है ये. Now there is something new in this example. We have already discussed odd row zero condition. उसके ऊपर हमने दो examples लिए हैं. This is the third example. There is also odd row zero condition, but it has something more than odd row zero condition. So that's why I've taken this example. So again, we have 1 plus gh of s is equal to, we are given with the equation. अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, if you have seen my first lecture, आपको पता है 1 plus g of s into h of s is nothing but your characteristic equation. 1 plus g of s, h of s is characteristic equation. We have already discussed this in first lecture. The denominator of closed loop transfer function is characteristic equation, and the denominator of closed loop transfer function is nothing but 1 plus h of s into g of s. So we are given with the characteristic equation. We have this equation. क्या पूछा है? Find the summation of roots on left hand side of S plane. Find the summation of roots on left hand side of S plane. Sorry. अगर कोई roots है on left hand side of S plane, if there are any roots on left hand side of S plane, we have to do the summation. Summation is nothing but addition, and we have to write the answer. Also is asking to comment upon the stability of a system. System क्या है? Stable है, unstable है और marginally stable है. We need to find. So इस एक example में you can get all the idea about odd row zero condition, and this is something new. Summation of roots on left hand side of S plane. So let's start. So I hope you have written the question. Please write down the question. I guess ये gate का question है, some gate EC question. Gate EC question. Right. As our basic normal thing, first we analyze in Routh-Hurwitz criteria. Every time we analyze the characteristic equation. कैसे एनालाइज करते हैं? सबसे पहले कोई कोएफिशिएंट मिसिंग है या जीरो है. s⁻⁶, 5, 4, 3, 2, 1. So there is no any s term missing, no any coefficient is 0. So first condition is satisfied that it is a valid characteristic equation. First condition तो satisfy हुआ है. Second condition, is there any sign change in the given characteristic equation? All are positive? Yes, all are positive. Any negative sign? No any negative sign. So second condition also satisfied कि सारे sign positive है, there is no any negative sign. So these two conditions satisfies, hence we can say the system can be stable. The system can be stable, and अगर ये दो conditions satisfy होते हैं, if these two conditions are satisfying, then we should proceed for developing the Routh-Hurwitz table. Then we need to proceed for developing the Routh-Hurwitz table. So please write down ये दो point जो अभी मैंने बताए थे. First is what? There is no any s coefficient missing. First condition. Second condition, there is no any sign change. There is no any sign change in the characteristic equation. Hence, there is a possibility of system can be stable, and one should start developing the RH table. So let us start RH table. So I have this characteristic equation given as s⁻⁶ plus 3s⁵ plus 4s⁴ plus 6s³ plus 5s² plus 3s plus 2. एक बार चेक करते हैं, यही है क्या?
Yes, it's correct. It's correct. Right? So we have the characteristic equation. Now let's proceed for developing the RH table. I would recommend कि आप ये वीडियो पॉज करें, फर्स्ट आप खुद से ट्राई करें, यू स्टार्ट डेवलपिंग द RH टेबल एंड आपका आंसर और मेरा आंसर लेट अस सी सेम आता है या नहीं. हाईएस्ट पावर ऑफ s is s raised to 6, s raised to 5, s raised to 4, 3, 2, 1, and I'll write here s raised to 0. I'll write down, no problem. Coefficient of s raised to 6 is 1, then comes 3, then 4, then 6, then 5, 3, 2, and last 0. And last 0. If you have seen my previous videos, then it is very easy to follow all these things. 4 into 3 is 12. 12 minus 6 is 6 divided by 3. So it is 2. To find this element, sorry, to find this element, 4 and 6 close करना है. You have to close 4 and 6. 3 into 5 is 15. 3 into 5 is 15 minus 1 into 3 is 3 upon 3. So 15 minus 3 is 12. 12 by 3 is 4. So यहाँ पे 4 आएगा. Now ये तो मैंने बहुत बार बताया है. The last element क्या है हमारे पास? We have 1. क्या है हमारे पास? 1, 3, 2, 0. In first lecture I have told you अगर ऐसा कुछ होगा, one element is 0, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमेशा 2 ही आएगा, right? 3 2 is 6. 6 minus 0 upon 3, आंसर will be 2 only. So जो लास्ट एलिमेंट है वो वापस यहाँ पे आएगा 2. This is 0. So s raised to 4 रो हो गया है. Then finding s cube रो, 6 2s are 12, 4 3s are 12. So 12 minus 12 is 0. So this is my 0. 2 into 3 is 6. 3 into 2 is again 6. 6 minus 6 is 0. ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0. Yes. Odd row है क्या? S cube है. Yes, it is odd row. So without any doubt, it is what? Odd row zero condition. It is odd row zero condition. Right. Yes. हमने 2 examples देखे हैं. We have already discussed the 2 examples on odd row 0. So I will not waste time again by telling all the steps. Then we have to find the auxiliary equation. क्या होगा auxiliary equation? This will be your auxiliary equation. This will be your auxiliary equation. Yes. What is my auxiliary equation? 2 it is 2 s to the power 4 plus 4 s to the power square plus 2 is equals to 0. No need to write plus 2. Yes. So this is my auxiliary equation. मैंने एक point लिखाया था in previous lecture when I was discussing about odd row zero condition. मैंने एक point लिखाया था. In auxiliary equation, all the s coefficients are even. s के coefficients कैसे होते हैं? Even होते हैं in auxiliary equation. Yes, correct है ना? सारे s के coefficients even ही है. सारे s के coefficient even ही है. Yes, please write down. यहाँ तक लिखो. Right? Differentiate the auxiliary equation with respect to s. 4 2s are 8, so 8s cube and 8s
So 8s cube plus 8s cube plus 8s, we have got the coefficient of auxiliary equation. Yes. ये कोएफिशिएंट कहाँ किससे रिप्लेस करना है? ऑड रो जीरो कंडीशन से. नाउ आप नया टेबल बनाओ, डोंट डू करेक्शन इन द सेम टेबल. आई एम डूइंग दिस. तो ये हटाने का है आपको. यू हैव टू रिमूव दिस. राइट. एस क्यूब है. कोएफिशिएंट क्या है? 8 है. सो राइट डाउन 8 हियर. देन वी हैव एस. अगर ये एस क्यूब का है तो ये एस स्क्वायर का होगा. नीचे आएगा एस का कोएफिशिएंट एस 8, ये 0 एंड ये 0. राइट. नाउ इट इज नॉट ऑड रो जीरो कंडीशन. Now it is not an odd row zero condition. yes. Can you solve? इसके आगे solve कर सकते हैं? Yes. क्या आएगा इसके आगे elements? S square के elements 2. If you solve, we'll get 2, then 0, and then 0. 2, 0, 2, 2, 0, 0. 8 into 4 minus 2 into 8 upon 8, आपको 2 आंसर आएगा. Then 8 into 2 minus 0 upon 8, again this term will come as it is. So 2 आ गया है. Right? Now we have to find the elements of the row s raised to 1, s to the power 1. 8 to the 16 minus 16, so ये होगा आपका 0. आगे कुछ है नहीं तो ये भी 0, ए भी 0, ये भी 0. सो अगेन ऑड रो जीरो कंडीशन आया है. दिस इज द न्यूमेरिकल, दिस इज द एग्जाम्पल इन विच ऑड रो जीरो कंडीशन arises for the second time. Odd row zero condition arises for the second time. This is my second time odd row zero condition. This is the second time odd row zero condition. Right? Second time odd row zero condition. Again you have to find the auxiliary equation. Again you have to find the auxiliary equation. If you want, please write down auxiliary equation number 1. इसको number 1 लिखो equation. जो पहला आया है auxiliary equation उसको equation number 1 लिखो. Second आएगा आपका auxiliary equation 2s square plus 2. Second auxiliary equation will be 2s square plus 2. Again you have to differentiate this auxiliary equation with respect to s. 4s plus 2 is constant तो 0 आ जाएगा. So 4s आ गया है. 4s आया है आपका आंसर. I am not writing the table again. मैं फिर से स्टार्टिंग से टेबल नहीं. आई एम नॉट राइटिंग द टेबल अगेन. लेट मी चेक द एलिमेंट्स. 2 2 0 0. सो यहाँ पे 2 2 0 और यहाँ पे आया था 0 0 0. ये ऑड रो जीरो कंडीशन था. नाउ टू रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन विद द ऑड रो जीरो कंडीशन. 4s s की पावर 1. सो s की पावर 1 ये 0 हटाना है. Replaced by 4. बाकी का as it is. Remaining as it is. Remaining as it is. 4 into 2 8. 8 minus 0 upon 4 again 2. Again 2. Right. So I hope आपका ये हुआ है लिख के. Now first is we have to check for system stable, unstable और marginally stable. Odd row zero condition हुआ है तो stable तो नहीं हो सकता system. Odd row zero condition हुआ है तो system stable तो नहीं हो सकता. It can be unstable or marginally stable. Let us see.
सो आई होप आपने लिखा होगा ये सब, राइट? राइट. तो लेट अस सी नाउ क्या क्या कोएफिशिएंट्स है, व्हाट आर द एलिमेंट्स विद देयर साइंस इन द फर्स्ट कॉलम. We have 1, 3, 2, 8, 2. 1, 3, 2, 8, 2. So it is 1, 3, 2, 8, 2. One, 3, 2, 8, 2, and S1 and S0 का 4 and 2. 4 and plus 2, right? So these are your elements in the first column. Let us check any sign change. From plus 1 to plus 3, no change, plus sign hai. From 3 to 2, no change, same sign. From 2 to 8, no change, same sign. 2 to 4, no change, same sign. 4 to 2, no change, same sign. Right. Total number of poles. Yes. S की highest power कितनी थी? In the characteristic equation, it was 6. Total number of poles on right hand side of S plane. Total number of poles on right hand side of S plane. How to determine number of poles on right hand side of S plane? Total number of sign changes in the first column. How many sign changes we have? No change, no change. So no poles are on the no poles are on the right hand side of S plane. No poles are on the right hand side of S plane. Third is total number of poles on imaginary axis and total number of poles on left hand side of S plane. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. We need to find this. Yes. Now what you do, just pause the video and try to find the answer for these two questions. कितने poles है on imaginary axis? चेक कर लो वो रिपीटेटिव है या नॉन रिपीटिंग है या एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. वी नीड टू फाइंड द पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. Yes. So how to find poles? How to find poles? वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है. Again, I am telling you, the roots of auxiliary equation will be the roots of main characteristic equation. इसके जो रूट्स होंगे वही होंगे रूट्स किसके? जो मेन क्वेश्चन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके. सो लेट अस फाइंड the roots of 2s raised to 4 plus 4s square plus 2. Yes, my first auxiliary equation, ये क्या है? First auxiliary equation, it is 2s raised to 4 plus 4s square plus 2 plus 4s square plus 2. Yes, equate it to 0.
2s plus 4s square plus 2 equal to 0. You can take 2 common, so s raised to 4 plus 2s square plus 1 is equal to 0. Yes. How to find the roots? Yes. How to do this? Let, you can say s square is equals to x. Then it will be x square plus 2x plus 1 is equals to 0. Now find the roots. Substitute the value x is equals to s square. Substitute the value x is equal to s square. आपको आएंगे रूट्स s is equals to plus minus 1j or plus minus 1j. Just check if you're getting the correct answer. Right. So if I draw this on the s plane, these are the roots for first auxiliary equation. क्या आएंगे रूट्स आपके? प्लस माइनस 1j एंड अगेन प्लस माइनस 1j. सो फर्स्ट इज प्लस माइनस 1j, यहाँ पे आएगा प्लस 1j और यहाँ पे आएगा माइनस 1j. ये हो गया. अगेन वी हैव द रूट्स ऑन द सेम, वी हैव द पोल्स ऑन द सेम लोकेशन प्लस माइनस 1j. सो यहाँ पे देखो, अगेन वी हैव द पोल्स ऑन सेम लोकेशन. सो यहाँ पे भी कॉमा प्लस 1j और यहाँ पे भी कॉमा माइनस 1j. So what are these? Repeating roots? Yes, these are repetitive roots on imaginary axis. Repetitive roots on imaginary axis. Total how many poles? 4 poles. 2 pair of repetitive roots. 2 pair of repetitive roots. Total 4 poles. So imaginary axis पे कितने हैं? 4 poles. 4 poles. 4 poles. We have got this answer by solving, by finding the roots of first auxiliary equation. By finding the roots of first auxiliary equation. हमारे पास तो 2 है ना auxiliary equation. 2 time odd row 0. So we have 2 auxiliary equation. सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2s स्क्वायर प्लस 2, वो भी हम सॉल्व करेंगे. सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2s स्क्वायर प्लस 2. इक्वेटेड. फाइंड द रूट्स. आई कैन राइट इज 2s स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले सकते हो. s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1j. So by solving the second auxiliary equation, we are getting 2 poles. One is at plus 1j. So यहाँ पे you can write plus 1j and second is at minus 1j. Second is at minus 1j. Second is at minus 1j. Means 2 poles on imaginary axis. Yes, please stop writing and listen here. Please stop writing. You can write it later. Second auxiliary equation gave us 2 poles on imaginary axis. These are 2 poles symmetrical about origin. Yes, why symmetrical about origin? Because it is an ORZ, odd row 0 condition. Whenever we have odd row 0 condition, poles will be symmetrical about the origin. Yes, symmetrical about origin. Now, second auxiliary equation shows 2 poles on imaginary axis.
and the first auxiliary equation shows two pair of poles on imaginary axis, मतलब total 4 poles. Now which is correct? This is correct or this is correct? या फिर both correct? Can you say कि ये 4 poles है due to first auxiliary equation and ये 2 pole है due to second auxiliary equation, means 4 plus 2 6 poles on imaginary axis. Can you say 6 poles on imaginary axis? Total number of poles on imaginary axis, can this answer be 6? Total number of poles are 6. All poles are on the imaginary axis. Can you say this? No. This is wrong answer. Either this is correct or this is correct. दोनों में से एक करेक्ट है. थोड़ा सोचो इसके बारे में. Yes, so I had given some points when we discuss odd row zero condition. मैंने point लिखवाया था. Whenever two times odd row zero condition arises, it means the poles are repeating. अगर एक ही बार odd row zero condition होता है, then there is no repeating poles or roots. But अगर 2 बार होता है, if 2 times the odd row zero condition occurs, that means this gives an information there are some repetitive poles on imaginary axis. How many pair of repetitive poles? It depends how many time odd row zero condition have occurred. यहाँ पे कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है. 2 बार odd row zero condition हुआ है. That means 2 pairs of repeating roots on imaginary axis. So this is correct. So how many poles on imaginary axis? 4 poles. Yes. Now in order to find the summation of roots on the left hand side of S plane, we need the exact location of poles on left hand side of S plane. पोल्स होंगे अगर -2 -3 पे, तो उन दोनों का एडिशन करना है एंड वी हैव टू राइट द आंसर. बट फॉर दैट वी रिक्वायर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हाउ टू डू दिस. लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाया था हाउ टू फाइंड द पोल्स. क्या करना है आपको? डिवाइड करना है. यहां पे होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहां पे होगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन. यू हैव टू डिवाइड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद द ऑक्सिलरी इक्वेशन. यस, व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन? इट इज s raised to 6 plus 3s raised to 5 plus 4s raised to 4 plus 6s cube plus 5s square plus 3s plus 2. So this is our characteristic equation, and if you check आपका auxiliary equation क्या था? First auxiliary equation was 2s to the power 4 plus 4s square plus 2. 2s to the power 4 plus 4s square plus 2. This was your first auxiliary equation. 2 हर plus 2 होगा यहाँ पे, plus 2. Let me check. Yes, plus 2 है यहाँ पे. So this is your first auxiliary equation. आप 2 common ले सकते हो. Yes, you can take 2 common. So it will be s raised to 4 plus 2s square plus 1. If you take 2 common, नहीं लिया तो भी चलेगा. There will be no change in the answer. So आपका जो first auxiliary equation था उसमें से मैंने 2 common लिया, then you have this thing.
राइट. s रेज टू 4 है, आई वॉन्ट s रेज टू 6, सो यहाँ पे आएगा s स्क्वायर. s स्क्वायर इंटू s रेज टू 4 इज s रेज टू 6. 2 into s raised to 4 is 2s raised to 4 plus s square. ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, सो इट इज 2s टू पावर 4 और ये 3s रेज टू पावर 5 प्लस 2s टू पावर 4 प्लस 6s क्यूब minus 4 minus 1, sorry 5 minus 1 is 4s square plus 3s plus 2. Right? ये बचा. Again we have to solve this. Plus I want s to the power 5, so I have to multiply by s. s से multiply करूँगा तो s raised to 5 मिलेगा, but I want 3s raised to 5, so I should multiply by 3s. I should multiply by 3s. So I'll get 3s to the power 5. 3s into 2, 3 to the 6, 6s cube plus 6s cube. 3s into 1 is 3s, so plus 3s. ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, सो क्या बचा 2s रेज टू 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2, राइट राइट. सो s रेज टू 4 है, आई वॉन्ट 2s रेज टू 4, सो प्लस 2, सो ये आएगा प्लस 2s रेज टू 4 प्लस 2 into 2 is 4, so 4s square plus 2, ये पूरा कट हो जाएगा, राइट. एवरीथिंग विल बी गॉन. लास्ट में आंसर 0 आना ही चाहिए. द रिमाइंडर शुड बी 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन मेक श्योर यू हैव डन सम मिस्टेक. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इट मीन्स यू हैव मेड सम ब्लंडर. इट मीन्स यू हैव मेड सम ब्लंडर. This is what I want. S square plus 3s plus 2, s square plus 3s plus 2. This is what I want. Factors s plus 1 into s plus 2. S is equals to minus 1 and s is equals to minus 2. So again I have proved कि दो पोल्स है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा. नो वन विल टीच यू हाउ टू फाइंड द पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, द एग्जैक्ट लोकेशन, द एग्जैक्ट लोकेशन. सो व्हाट इज योर फाइनल एस प्लेन? हाउ विल बी योर फाइनल एस प्लेन? हाउ विल बी योर फाइनल एस प्लेन फॉर द गिवन मेन गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कितने रिपीटेटिव रूट्स हैं, पोल्स होंगे? सो देयर आर 2 पेयर्स. सो ये आई गेस इट वाज प्लस 1j कॉमा प्लस 1j, एंड यहाँ पे भी रिपीटेटिव रूट्स है माइनस 1j एंड माइनस 1j. यस करेक्ट. राइट, 4 हो गए. सो 4 पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस. बचे दो कहाँ पे है? द रिमेनिंग 2 आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. वन इज एट -1, सेकेंड इज एट -2. सो टोटल 6 पोल्स. टोटल 6 पोल्स. टोटल 6 पोल्स. उसमें से इमेजिनरी एक्सिस पे कितने हैं? 4 है. दोज आर रिपीटेटिव. पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड 2 होंगे. कौन से है 2? एट s इज इक्वल्स टू -1 एंड s इज इक्वल्स टू -2. क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द समेशन. फाइंड द समेशन ऑफ द पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड
on the left hand side of S plane, -1 plus -2 करो, right? Comment upon stability, system तो unstable है. Why? Because repetitive roots lying on imaginary axis makes system unstable system. Summation of roots on left hand side of S plane, S is equals to -1 plus of -2 -3 is the answer.